Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Jaya Rukmini Dwarkadhish, Jaya Rukmini Dwarkadhish, Rukmini Dwarkadhish, Jaya Rukmini Dwarkadhish. Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Rukmini Dwarkadhish ki, Shri Gaur Nitai ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gauri Premanande. Canto 3, no? Which stack is it? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam Saraswatim vyasam tatso jadhiraye nasta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamaśloke Bhakti Bhavati Naistike. So reading from Srimad Bhagvatam, Canto 3, Chapter 25, The Glories of Devotional Service, Text 15. Chetaha kalsvasya bandaya Chetaha kalpasya bandaya Muktaye chatmano matam Muktaye chatmano matam Guneshu saktam bandhaya Guneshu saktam bandhaya Ratam vapumsi muktaye Ratam vapumsi muktaye Chetaha kalavasya bandhaya Muktaye chatmano matam Guneshu saktam bandhaya
प्रथम वा पुंसि मुक्तये चेतः कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय प्रथम वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बन्धाय तम पुंसि मुक्तये चेतः कल्वस्य बन्धाय तम पुंसि मुक्तये माता जी चेतः कल्वस्य बन्धाय गुणेषु सक्तं बन्धाय प्रथम वा पुंसि मुक्तये चेतः कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय प्रथम वा पुंसि मुक्तये चेतः चेतना खलु निसंदेह अस्य उसका बंधाय बंधन के लिए मुक्तये मुक्ति के लिए च तथा आत्मनः जीव का मतम माना जाता है गुणेषु तीन गुणों में सक्तम मोहित बंधाय बद्ध जीवन के लिए रतन आसक्त वा अथवा पुंसी परमात्मा में मुक्तये मुक्ति के लिए अनुवाद का तात्पर्य अनुवाद जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है, किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित होता है। स्थित हो तात्पर्य कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेषु या माया चेतना में प्रकृति के तीन गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतो कभी रजो और कभी तमो गुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य जिनमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप है। जब वही चेतना या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थानांतरित हो जाती है या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है तो वह मुक्ति के पद पर होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I'd like to welcome all of you this morning Bhagvatam class. तो आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं आज के भागवतम दर्शन। Wish you happy Independence Day. आप सबको स्वतंत्रता दिन की तो नहीं, Independence. उल्टा Real independence when we depend on Krishna. परावलंबी दिन की आप सबको शुभकामनाएं। Right? If you want to become happy, not by independence, by becoming dependent. तो हम कभी स्वतंत्र होकर सुखी नहीं हो सकते। वास्तविक रूप से तो हम किसी भगवान के ऊपर आश्रित होकर अवलंबित होकर हम सुखी हो सकते हैं। Charte svabhagya swarat. Krishna is fully independent. केवल भगवान ही स्वराट है, भगवान ही स्वतंत्र है। So, the consciousness, Chetana, the consciousness is by nature pure. चेतना ये मूलतः शुद्ध होती है। And consciousness is symptoms of the soul. और चेतना यह आत्मा का लक्षण है। So, it is pure. इसलिए वो शुद्ध है। The body is conscious because of the presence of the soul. तो शरीर जीवित रहता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा रहता है। This wood is not conscious because there is no soul. जैसे लकड़ी है, उसमें कोई चेतना नहीं क्योंकि उसमें कोई भी आत्मा नहीं। So, just like the sun, there is sunshine coming from the sun. So, that's the energy. Sunshine is energy coming from the sun. तो जो सूर्य प्रकाश होता है वो सूर्य की शक्ति है जो सूर्य से आता है। Similarly, the consciousness is coming from the soul. उसी प्रकार चेतना ये आत्मा से आती है। Just like a battery, currents coming from the battery. जैसे हम देखते हैं कोई विद्युत है, करंट है, वो कहाँ से आता है? बैटरी से आता है। Right? Battery you can see, but the current you cannot see. So it's emanating from the battery. हालांकि हम बैटरी को देख सकते हैं लेकिन करंट को नहीं देख सकते, लेकिन हालांकि करंट कहाँ से आ रहा है? बैटरी से आ रहा है। Of course, sometimes battery become discharge. कभी-कभी जो बैटरी की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। But soul never get discharged. लेकिन सोल की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। Avinasi tu tadvidi yena sarvam idam tatam vinasam avyayasya means soul is eternal. आत्मा ये शाश्वत होता है, कोई मरता नहीं। So this consciousness is by nature pure. तो हमारी चेतना ये मूलतः शुद्ध होती है। But when it comes to this body, it gets contaminated, it get conditioned. तो जब आत्मा इस भौतिक देह को धारण करता है तब ये चेतना बद्ध या फिर दूषित हो जाती है।
Just like the rain fall, the water rain is pure. जैसे जो वर्षा का जो जल होता है वो बहुत अशुद्ध होता है. But when the rainwater comes in contact with the earth, it becomes muddy. तो जब यह वर्षा का जो जल है, जब वो इस पृथ्वी को स्पर्श करता है, तो वो दूषित हो जाता है. This bulb, जैसे बल्ब है, this current is there, उसके अंदर क्या है? विद्युत करंट है. and the light is white, लाइट क्या है? white color. सफेद रंग का है. But if the bulb is red, and then it will exhibit red color light outside. अगर उस बल्ब को अगर हम लाल कलर लगा दें, तो उसके अंदर से लाल प्रकार का प्रकाश आएगा. If we put blue color bulb, and the light will become blue. तो अगर हम नीले रंग का अगर बल्ब रखते हैं, तो उससे नीले प्रकार का प्रकाश आएगा. But originally inside the light it is white. लेकिन मूलतः जो प्रकाश है वो सफेद रंग का है. But because in the body we have the mind, the intelligence, and the false ego. So the soul is inside, but what types of consciousness we are exhibiting outside depending on the mind, intelligence, and the false ego. तो आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है. तो मन बुद्धि अहंकार जिस भावना में रहेगा, उस पर जिस प्रकार के शरीर की चेतना का प्रभाव रहेगा, उसी प्रकार की वो चेतना को प्रकट करेगा. But because mind, intelligence, false ego, they are influenced by the three modes of nature, so this consciousness also is exhibiting that kind of consciousness depending on the modes of nature. तो मन बुद्धि अहंकार ये भी तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, तो इसीलिए चेतना भी तीन गुणों से वो प्रभावित हो. Krishna gave a very nice example to Uddhav. उद्धव को भगवान बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं. It's very interesting. He says, just like in the forest, bamboo, in the forest of bamboo, जैसे बांस के जंगल में, you have big bamboos here. So the bamboo, due to friction, and then it creates fire. जैसे जो बांस होता है, जो बांस होता है उसमें एक दूसरे के साथ घर्षण होने से अग्नि प्रज्वलित होती है. So due to friction of each other, it creates fire. That fire is emanating from the bamboo. तो दो बांस के बीच में घर्षण होने से अग्नि प्रज्वलित होती है, और यह अग्नि कहाँ से आ रही? बांस से आ रही है. And the same fire burns the source of the bamboo's birth, means the forest. और वही अग्नि बांस का जो स्रोत है यानी जंगल, उसको भी नष्ट कर सकती है. And the fire is burning, and the same fire, it calms itself because the fire become extinguished by the action of the fire itself. Huh? Yes, the fire is burning, right? It's burning the forest. And how does the fire stop? The fire becomes extinguished by its own action. तो जो ये अग्नि जो बांस से प्रज्वलित हो रही है, उससे वो जंगल को पूरी नष्ट कर देती है, लेकिन यही अग्नि उसके ही कार्य से वो नष्ट भी हो सकती है. The fire stopped because of its own action. तो अग्नि अपने ही कार्य से कुछ समय के बाद वो बुझ जाएगी. You get the point? I'll repeat again. It's interesting what Krishna is saying. The bamboo forest, the bamboo, because due to friction, it creates fire. जैसे भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि बांस के घर्षण से एक दूसरे के साथ जो घर्षण होता है उससे अग्नि प्रज्वलित होती है. And that same fire burns the forest. और यही अग्नि सारे जंगल को नष्ट करती है. And the forest is in fact the source of the birth of the bamboo, but it can burn the source of its birth. तो हालांकि जंगल ये स्रोत है
बांबू या फिर बांस को जन्म देने का, लेकिन वही उनके दोनों से घर्षण से निकली हुई अग्नि उस स्रोत को यानी जंगल को ही नष्ट कर देती है। And then the fire gets extinguished, becomes stopped by its own action. और अग्नि अपने ही स्वयं के कार्य से बुझ जाती है। Similarly, if the mind intelligence is purified, इसी प्रकार अगर मन बुद्धि अगर ये शुद्ध हो जाते हैं, what is the source of our mind intelligence? How do we get these types of mind and intelligence? हमें मन बुद्धि का स्रोत क्या है? Three modes of nature. इस भौतिक प्रकृति के तीन गुण। The birth of mind intelligence is depending on the three modes of material. That's the birth of the mind मन intelligence. बुद्धि का जो जन्म है या निर्माण है वो तीन गुणों के ऊपर आश्रित है। So if the minds and the intelligence become purified, then it can burn its own source of birth, that the three modes of nature. तो अगर मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं तो वही मन बुद्धि उनके जन्म का जो स्रोत है यानी तीन गुणों को नष्ट कर देता है। And then by the good actions of the mind, of the intelligence, then it calms itself, it becomes peaceful and happy. और मन और बुद्धि के स्वयं के ही शुद्ध कार्यकलाप से वे भी शांत हो जाते हैं। Got a point. It's the comparison. Krishna is giving to Uddhava. Krishna is telling to Uddhava. तो यह तुलना भगवान उद्धव को बता रहे हैं। So, in fact, the soul is pure by nature. तो वास्तविक मूलतः आत्मा यह शुद्ध होता है। So, in this verse, it's explaining that when the soul, the consciousness is entangled by three modes of nature, it is called condition. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आत्मा तीन गुणों से या चेतना तीन गुणों से प्रभावित हो जाती है तो वो दूषित या फिर बद्ध हो जाती है। But when the consciousness is not entangled, then it is liberated. तो जब चेतना ये आसक्त नहीं रहती है तब जाकर वो मुक्त होती है। So we have, of course, consciousness. We also have the super consciousness. तो जैसे एक चेतना होती है और एक दिव्य चेतना होती है। Super consciousness. And that is परम चेतना। the Supreme Personality of Godhead. चेतना एक दिव्य, ये चेतना सामान्य आत्मा की होती है और जो परम चेतना है वो भगवान से संबंधित है। Paramatma. परमात्मा। So the soul is Chitragya. The soul is a knower of his field of activity. तो आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। आत्मा अपने ही कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है। We know only of our body. We are conscious of our own body. तो हम केवल हमारे ही शरीर के बारे में जानते हैं। But we don't know about others' body. लेकिन हमें दूसरों के शरीर में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। So it's called Chetra Gya, his own field of activity. इसे आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वो अपने ही कार्य क्षेत्र के बारे में जान सकता है। But the Lord is the knower of all field of activities. लेकिन भगवान इस सभी प्रकार के कार्य क्षेत्रों को जान सकते हैं। He knows your body. Lord knows his body, your body, everyone's body. He knows what is going on inside the body. तो भगवान सभी जीवों के शरीर में क्या चल रहा है भगवान जान सकते हैं। I know my pain, and when this is paining, I know, but I don't feel your pain. तो जब मेरे उंगली में कुछ लगता है तो मुझे उस दुख का अनुभव होता है, लेकिन दूसरों के शरीर में क्या दुख हो रहा है उसका अनुभव मुझे नहीं होता। So we are conscious of our own body. तो इस प्रकार हम हमारे ही शरीर के बारे में हम जानते हैं। But that is also not complete. We don't know completely. लेकिन ये भी हम अपने शरीर के बारे में भी पूर्णतः रूप से नहीं जानते।
Do you know how these organs are functioning inside the body? क्या आपको पता है हमारे अलग-अलग शरीर के जो विभिन्न अंग है, भाग है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं? How many hair you have in your body? You don't know, हमारे शरीर के ऊपर कितने बाल हैं क्या हमें पता नहीं होता है। right? So we know directly, but we don't know indirectly. तो हमें सीधे रूप से पता चलता है हमारे शरीर के बारे में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है। But Lord Krishna, He knows directly and indirectly. लेकिन भगवान कृष्ण हर जीव के शरीर के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। Janmadiyasya yatunvayat itaratas. Atunvayat means directly, itaratas indirectly. जैसे इस श्लोक में भागवत में कहा गया कि भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से जानते हैं। And He knows He's present everywhere. और भगवान सब कुछ जानते हैं क्योंकि वे हर जगह उपस्थित हैं। Vedaham samatitani vartamani charjuna bhavishyani cha bhutani. He knows past, present and future. He knows everything, but no one knows Him. भगवान सब कुछ जानते हैं, हर जीव को जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को भी जानते हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। So He's a knower. And was also Abhigya Charteswa Abhigya Surat. So He is fully cognizant and also fully independent. Surat means is independent. तो भगवान हर जीव के बारे में जानते हैं और भगवान पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। We are not independent, but He is independent. तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन भगवान वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं। So, and He's also present everywhere. और भगवान भी हर सृष्टि के हर कोने-कोने में उपस्थित रहते हैं। And He knows Abhigya. He knows everything. और भगवान अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। So, it's like nowadays, some countries, they send spies to other country to find out about the secret. तो एक देश दूसरे देश में जासूसों को भेजता है उस दूसरे देश के बारे में जानने के लिए। American, especially America, always sending spies. हमेशा अमेरिका अलग-अलग देशों में अपने जासूसों को भेजते रहते हैं। Or they send satellite या फिर वो सैटेलाइट को अंतराल में भेजते हैं। just to discover the secret of other country. दूसरे देशों के गुप्त रहस्य को जानने के लिए वो उपग्रहों को भी भेजते हैं। They discover the nuclear bombs and so many things. दूसरे देशों में अणु बम है या नहीं, और बहुत सारी चीजों को जानने के लिए वो उपग्रहों को भी भेजते हैं। But Krishna is Abhigya Surat. लेकिन कृष्ण ये अभिज्ञ स्वराट है। He doesn't need to send spies भगवान को कोई जासूसों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। to get information. He doesn't need to send any spies. कोई भी जानकारी लेने के लिए भगवान को कोई किसी जासूस को भेजने की जरूरत नहीं होती। And Krishna doesn't need to send satellites और कृष्ण को अंतराल में उपग्रहों को भी भेजने की जरूरत नहीं to get information. कुछ जानने के लिए। Right? सही है कि He's Abhigya Surat. He knows everything. भगवान अभिज्ञ स्वराट है, भगवान सब कुछ जानते और स्वतंत्र है। The Vishyani cha Bhutani Vartamani, the past, present, future. He knows everything. भगवान भूत वर्तमान और भविष्य तीनों का आकर जानते हैं। When we want to create, we have to have the engineer. We have to have so many things, materials. तो जब हमें कुछ भी निर्माण करना हो तो उसके लिए हमें इंजीनियर या फिर जो भी अलग-अलग प्रकार की सामग्री लगती है, उसकी सबकी आवश्यकता होती है। This tent wala, pandal wala came for the few days. They were constructing these pandals, so many woods and bamboos and ropes and tubes, so many materials they need. तो हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पर पंडाल वाले पंडाल को बना रहे हैं। जब बनाने के लिए उनको अलग-अलग वस्तुएं लग रही, बांस लग रही है, डोरी लग रही है और अन्य कई सारी सामग्री को लग रही है। And you must have somebody who knows how to construct, an engineer. और इस पंडाल को कैसे बनाना है, उसको उसके
उसके बनाने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए उनको इंजीनियर भी लगता होगा। But Krishna doesn't need all this. लेकिन कृष्ण को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। He doesn't need to send spies. भगवान को कोई किसी को जासूस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। He doesn't need to send satellites. भगवान को उपग्रह भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। To create, he doesn't need an engineer. और कुछ निर्माण करने के लिए उनको इंजीनियर की जरूरत नहीं होती है। How does he do that? तो फिर ये सब कैसे करते हैं? It's saying, Janmadi yasya yatunvayat itaratas charte swabhigya surat. He is fully cognizant, he is fully independent, and he knows everything directly and indirectly. तो भगवान ये सब कुछ जानते हैं और पूर्ण स्वतंत्र हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से जानते हैं। I've already mentioned, we know only directly our body. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमें केवल हमारे शरीर के बारे में पता होता है। But we don't know indirectly. लेकिन हमें अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं। What is happening, how the organs are functioning, how the foods are getting the energies. हमारे शरीर के विभिन्न भाग कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे शरीर के विभिन्न भाग को शक्ति मिल रही है, ये हमें पता नहीं होता है। You know, the blood circulation in the body as supplying energy all over the body. तो शरीर में रक्त प्रवाह कैसे हो रहा है और कैसे शरीर में अलग-अलग भागों में शक्ति का संचार हो रहा है, वो हमें पता नहीं है। And the body also there is numbness, you know, numbness like numb, like the nail and the hair. There's no blood, so there's no sensation. तो शरीर में ऐसे कुछ बाल होते हैं, नाखून होते हैं जिसमें कुछ भी चेतना नहीं होती है। So we don't know. We know only directly, but we don't know indirectly. इस प्रकार हमें केवल प्रत्यक्ष रूप से हमें पता चलता है, अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता नहीं चलता है। But Lord, He knows everything. लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। Janmadiyasya yatunvayat itaratas. Yatunvayat directly, itaratas indirectly also He knows. यतुन्वयन यानी प्रत्यक्ष रूप से और इतरत यानी अप्रत्यक्ष रूप से। So He's conscious of everything. तो भगवान सब कुछ जानते हैं। So to create, He doesn't need engineers. कुछ भी निर्माण करने के लिए कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं होती। He doesn't need any materials. और कोई भी किसी भी सामग्री की भी जरूरत नहीं। How does He create? Just desire. कैसे वो सृष्टि करते हैं? केवल स्वेच्छा से। Just think about, and then creation is taking place. बस वो केवल विचार करते हैं सृष्टि का और सृष्टि हो जाती है। So this is called a super consciousness. तो इसे कहते हैं परम चेतन। So consciousness, we are, you know, the soul. The consciousness is a symptom of the soul, and we are conscious. But our consciousness also is limited. But the Lord is super conscious. तो आत्मा का लक्षण चेतना है और हमारी चेतना यह सीमित चेतना होती है, लेकिन भगवान की चेतना ये परम चेतना होती है। Abhigya Swarat, he is also fully cognizant. और भगवान पूर्ण रूप से जानते हैं। He is everywhere. भगवान हर जगह उपस्थित रहते हैं। And he knows present, past and future. भगवान को भूत, वर्तमान, भविष्य। One time there was this one teacher had 3 students. So he gave each one one apple. एक गुरु ने, एक शिक्षक ने अपने 3 विद्यार्थियों को एक सेब दे दिया। So he said, you go and eat this apple where there is nobody and come back. तो उन्होंने बताया उनके शिष्य को कि आप ये सेब ले लो एक और ऐसी जगह जाकर खाओ कि जहाँ पर कोई ना हो। So the first one went to the backside of the school, ate the apple and come back. तो पहले विद्यार्थी ने स्कूल के पीछे जाकर सेब को खा लिया और वापस आ गए। The second one, he went into the town, find a place where there's no one, and then he ate the apple and come back. दूसरा विद्यार्थी वो forest, yeah, he went to the forest. दूसरा विद्यार्थी वो जंगल में गया और उसमें जंगल में एक शांत से जगह पर एप्पल को खा लिया, सेब को खा लिया, वापस आ गया। And the third one did not come back. और
तीसरा वो आपस ही नहीं है। And teacher was in anxiety. और जो गुरु थे वो थोड़ी चिंता में थे। Where has he gone? कहाँ पर वो चला गया? And he came next day. और वो दूसरे दिन आए। And then he came back with the apple in his hand. सेब के साथ वापस आ गया। And teacher said, well, what happened to you? You came up, I told you to eat apple, where there's no one, but you came with the apple back. तो गुरु बोलने लगे, अरे मैंने तुम्हें सेब खाने के लिए बोला था और तुम सेब को वापस लेकर आए। If you told me to eat the apple where there's nobody, but I could not find any place like that. तो बोले कि गुरु जी आपने बताया था कि मुझे ये सेब ऐसी जगह खाना है जहाँ पर कोई रहता ही नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगह ही नहीं ढूंढ पाया कि जहाँ पर कोई नहीं रहता। Everywhere there is living entities. There is the air, there is sunshine, there is the trees, there is the living entities, there is ants, there is everywhere there is, all pervading. तो हर जगह हवा को हम देखते हैं, हवा है और जीव है, पानी है, तो ऐसे ये सभी अलग-अलग तत्व हर जगह देखते हैं। And the teacher said, yes, this is honesty. और गुरु जी कहे हाँ, ये प्रामाणिक है। So we think, people think that they can do nonsense activities, abominable activities. There is no one, but Lord is present everywhere. लोगों को लगता है कि हम कुछ भी गलत कार्य करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं है, लेकिन भगवान ये देख सकते हैं। Church is, we can get away from the laws of government, but not from the laws of God. तो हम इस जगत के जो जगत की जो सरकार है, फिर कोर्ट है, उन्होंने बनाए हुए नियम से हम भाग सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो बनाए हुए प्रकृति के नियम है उनसे हम भाग नहीं सकते। So this is a difference between consciousness and then super consciousness. Of course, Bhagvatam also is speaking about three levels of consciousness. Jagruti, wakefulness, like now you're all awake, that is Jagruti. And then there is Swapna. When you sleep, then this is Swapna. And then there is deep sleep. What's it called? Susupti. Ravan, Kumkaran, in which stage is he? That is super susupti. And this consciousness always rotating. We are awakeful, we go dreaming, and then we sleep, and then we awake again, and then we dream again, and then we go to sleep. तो ये चेतना इन तीन चक्र में घूमती रहती है, कभी जागृत अवस्था में, तो कभी सुषुप्ति अवस्था में, तो कभी स्वप्न अवस्था में। So Kumkaran goes into deep sleep. और कुंभकर्ण ये सुषुप्ति अवस्था में जाता है, गहरी नींद में। And then he wakes up after 6 months. और वो 6 महीने बाद उठ जाता है। Death is also, what is death? Death is also deep sleep. मृत्यु भी सुषुप्ति की अवस्था है, गहरी निद्रा की अवस्था। Right? You go into, when somebody dies, he goes into susupti, deep sleep. जब कोई मरता है तो वो भी सुषुप्ति अवस्था में जाता है। And when does he wake up? In next birth, none of the body. और जब कब वो जाग जाता है, जब वो दूसरे शरीर में जाता है। And when there is pralay, all living entities goes into the body of Vishnu, Mahavishnu. So that is, they go into deep sleep again. तो जब प्रलय होता है तो सभी जीव महाविष्णु के शरीर में फिर से प्रवेश करते हैं, ये भी सुषुप्ति की अवस्था है। And when there is creation, they take birth again, and then they will awake. They becomes awake. और जब फिर से सृष्टि होगी और वो भगवान के शरीर से बाहर आएंगे जीव, तो ये जागृति अवस्था है। So this three level of consciousness always rotating. तो ये चेतना के तीन स्तर हमेशा एक के बाद एक चलते रहते हैं। A baby in the womb of mother
which stage of consciousness? माता के गर्भ में जो गर्भ रहता है वो किस अवस्था में रहता है? Swapna. Baby is in Swapna. It says up to 7 months the consciousness is there, but it's not awakened, it's not developed. माता के गर्भ में 7 महीने तक उस शिशु की चेतना वो विकसित नहीं होती है. After 7 months, then he start becoming conscious. 7 महीनों के बाद वो जीव माता के गर्भ में वो उसको चेतना मिलना शुरू हो जाता है. He start feeling, oh, this is a place where I am, and sometimes he get bitten by worms. Sometimes whatever the mother is eating, and the baby get that feeling. गर्भ को लगता है कि मैं कहाँ हूँ और वो अनुभव करता है कि उसके कोमल शरीर को गर्भ के अंदर जितने भी जीव है वो काट रहे हैं, उसको दर्द का अनुभव होता है. So before that is in a state of, we can say, deep sleep. ऐसा कह सकते हैं कि इस अवस्था से पहले वो सुषुप्ति अवस्था में. And then when he takes birth, and then he comes into wakefulness. और जब वो जन्म लेता है तो फिर वो जागृति अवस्था में आता है. And when he is awake, and he become attached to different material things, and he become entangled in this material world. और फिर जन्म लेने के बाद वो अलग-अलग वस्तुओं से आसक्त हो जाता है और इस प्रकार इस भौतिक जगत के बंधन में फंस जाता है. So when we are awake, and then we are not sleeping, we are not dreaming, we are not in deep sleep. जब हम जगे हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, तो उस समय हम स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहते. And when we are in deep sleep, and then we are not awake, we are not dreaming. और जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो उस समय हम जागृति और स्वप्न अवस्था में नहीं रहते. And when we are dreaming, then awakefulness is not real, deep sleep is not real. जब हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो हम जागृति और सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहते. So which consciousness is real? No one of these consciousness are real. तो इनमें से कौन सी चेतना का स्तर ये वास्तविक होता है? तो उसका उत्तर है कि एक भी स्तर, ये 3 अवस्था जो है चेतना की, एक भी शाश्वत नहीं है वास्तविक. The reality is turiya. Which consciousness? Krishna consciousness. वास्तविकता क्या है? केवल कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना ही वास्तविक होती है. So this is why we have to rise to the platform of Krishna, Turiya platform, the 4th level of consciousness. What is Krishna consciousness? इसलिए हमें चौथी चेतना तक हमें उन्नत होना है, वो है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना. Now there's a question. What's the name? Avanti Brahmana says, body is dead matter, right? तो एक प्रश्न है. अवंती ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा शरीर एक जड़ पदार्थ से बना हुआ है, जड़ है शरीर. And soul is spiritual. और आत्मा ये आध्यात्मिक है. When we are suffering, who is suffering? The soul or the body? दुख कौन भुगतता है? आत्मा दुख भुगतता है कि शरीर दुख भुगतता है? Sharir. The sharir is dead matter. अगर शरीर दुख भुगतता है कि शरीर तो जड़ पदार्थ है, वो कैसे दुख का अनुभव करेगा? Atma is spiritual. और आत्मा तो आध्यात्मिक है. You got a question? प्रश्न समझा कि नहीं आपको? Who suffers? Body कौन दुख भुगतता or है? the soul? Soul is attached to this, identifying himself to this material body. That's why he is suffering. Yeah. Due to ignorance. हाँ, तो अज्ञान के कारण वो दुख भुगतता है. It's not the body, it's not the soul. तो ना आत्मा दुख भुगतता है और ना शरीर दुख भुगतता है. वो अज्ञान के कारण ऐसा समझता है कि मैं दुख भुगत रहा हूँ. Yes. Due to ignorance. And what is that ignorance? I think I am this body. वो अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान है. और इस अज्ञान के कारण वो दुख का अनुभव करता है. It's not the soul, it's not the body. Body is dead matter. ना शरीर दुख भुगतता है, ना आत्मा दुख भुगतता है. Atma is spiritual. आत्मा ये आध्यात्मिक है. So because of thinking, due to ignorance, because of thinking that I am this body, due to the covering of ignorance and his, अज्ञान के आवरण से या फिर मैं शरीर हूँ,
इस भावना से वो दुख का अनुभव करता है। So this is what Kapila Muni is explaining, that when the soul get entangled, and it is called condition, and when the soul is not conditioned, then it becomes liberated. तो यही कपिल मुनि यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जब जीवात्मा ये आसक्त हो जाता है तो वो बद्ध अवस्था कहलाती है, और जब वो मुक्त हो जाता है तो वो मुक्त अवस्था या फिर कृष्ण भावना में वो स्थित हो जाता है, मोक्ष की चेतना। Right? I think devotees will have to be also going on invitation for the Mashtami. So thank you very much. We'd like to stop here. Sri Prabhupada ki, Srimad Bhagvatam ki, Itai Gaur Premanande.